Hello students, good morning to all of you. Today we are going to discuss the most important MCQ of September examination 2023 PSCV board. So start ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ 11th ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ MCQ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। First MCQ, that is a 4.4 gram of carbon dioxide contain how many liter of carbon dioxide at STP? First option 22.4 liter, second 4.4 liter, third 2.24 liter and fourth option that is a 0.4 ਲੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ given statement 4.4 gram divided by 44, that is a mass of carbon dioxide molecule, that will give the 0.1 mole, and 1 mole that will contain 22.4 liter and 0.1 mole contain multiply 22.4 multiple 0.1, that will give 2.24 liter. That is the correct answer. C. Correct answer is C option. That number of significant figure is 1.020. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 1.020 that are the 4 digit. so number of significant figure in 1.020 is, so answer is first option A, 1, B2, C3 and D4, and correct answer that is a C option 3 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, doesn't count in the significant figures. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। next empirical formula of benzene formula, that is a C6H6 and empirical formula is CH. correct first option is C6H6, second CH, third C12H22O11 and last option CH2O twice, and correct answer that is a B option CH. ठीक है जी। next which of the following is dependent of temperature? as we know the first term first option that is a molarity, second molality, third mole fraction and fourth that is a mass percentage. molarity denoted by capital M, molarity that is a small m, and mole fraction that is a x, and mass percentage that is a m percentage denote करते हैं। molarity number of moles of solute divided by volume of solution, molality number of moles of solute divided by weight of solvent। ठीक है। mole fraction that is number of moles of one component to a total number of moles। अगर देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म की है, जिस विच वॉल्यूम चेंज होएगी इट मीन वो वाली टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म है। सो ये मोलैरिटी दे विच वॉल्यूम प्रेजेंट है, इस करके ये टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म है, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय फर्स्ट दैट इज लवोजियर, सेकंड है डाल्टन, थर्ड है लुइस प्रोस्ट एंड डी ऑप्शन दैट इज ए गेलो-सॉक, एंड करेक्ट आंसर दैट इज ए डाल्टन। ठीक है जी। next which of the following is a homogeneous mixture? homogeneous mixture is the mixture having the composition mix out throughout the substance. First option that is a common salt, second air, third iron filling, and fourth soil, and the correct option is air. Air is the composition or a homogeneous mixture of different gases। ठीक है। next is the what is the SI unit of luminescent intensity? that is a candela is the SI unit of luminescent intensity, that is number of, next question is number of proton in C6H13 है। अगर ये देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ प्रोटोन्स देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ते प्रोटोन दैट आर 6। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 12, सेकंड है 6, थर्ड है 13, next D option 7, and correct option is B option। next question is for a principal quantum number n value equal to 4 and total number of orbital having L equal to 3, first we calculate the orbital। अगर 4 है साढ़े कोल तो L वैल्यू 3 है, L वैल्यू अगर साढ़े कोल होएगी 0 that is the S orbital, L अगर 0 है S orbital है, 1 है P है, 2 है तो D है, 3 है तो F orbital है। तो इतने साढ़े को L वैल्यू 3 है, इट मीनस 4 F orbital है। अगर 4 F orbital है सो हैविंग F orbital ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे 7 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है जी।
So correct option is B option. Next है neutrons are present in all atoms except न्यूट्रन प्रेजेंट है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀਲੀਅਮ that is a 246 second है कार्बन C12 हाइड्रोजन that is a 1H1 एंड नियोन है एंड देखते हैं सी ऑप्शन दैट इज़ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ है 1H1 है तो नंबर ऑफ ਜਿਹੜੇ न्यूट्रॉन ਜਿਹੜੇ है दैट इज़ बिकम 0 ठीक है 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0 ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑप्शन होएगी सी आंसर नेक्स्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन सेकंड है फोटोन सी ऑप्शन है पोजिशन थर्ड है एंड प्रोटोन एंड करेक्ट ऑप्शन इज फोटोन इज द क्वांटा ऑफ एनर्जी ठीक है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैकेट ऑफ एनर्जी ठीक है जी नेक्स्ट है दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू एजीमुथल क्वांटम नंबर एंगल एल कहते हैं जो एंगुलर क्वांटम नंबर है दैट विल गिव द फर्स्ट ऑप्शन साइज है सेकंड शेप है थर्ड ओरिएंटेशन एंड स्पिन एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन दैट इज ए शेप ठीक है जी लो लेटस नेक्स्ट दैट इज ए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हाँ जी ये देखते हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन द आयोनेशन एंथैल्पी इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट दैट इज़ ए किलोजोल पर मोल रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम in its ground state. Alternatively, ionization energy is the amount of energy in kilojoule per mole needed to knock out the 1 mole of electron from 1 mole of isolated gaseous atom. In this definition, the gaseous atoms are specially used because one atom in the gaseous phase is that is virtually uninfluenced by its neighboring, so there is no intermolecular forces into the while measuring the ionization and energy. The magnitude of ionization energy is the measure the how tightly the electron are held in the atom. ionization energy की है the amount of energy required to remove the most loosely bound electron कि कितना जल्दी ईजिली हैगा कि ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ ਆਇਓਨੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਓਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ which has a lower ionization enthalpy आयनेशन से लो उसे को होएगी जिसका साइज वड्डा होएगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ ए पोटाशियम सेकंड है सोडियम नेक्स्ट दैट इज़ ए सीजियम एंड लास्ट दैट इज़ ए फ्लोरीन अगर देखते इन्हों के तो सीजियम का साइज की है बहुत ज़्यादा वड्डा है तो ईजिली इलैक्ट्रॉन जो आउट हो जाता है एंड करेक्ट ऑप्शन है सीजियम that is also called as a most electropositive element ठीक है they have tendency to release the electron and behave as a electropositive in nature ठीक है out of the following which has a highest ionization energy size highest किहदी होएगी जिहदी की है लिक्विड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ मैक्सिमम फिलिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन होंगे ठीक है ताकि वो स्ट्रोंगली बाउंड हो जाए न्यूक्लियस के नाल तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन सेकंड है ऑक्सीजन थर्ड है सोडियम नेक्स्ट दैट इज़ ए पोटाशियम एंड करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ए फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन इन केस ऑफ नाइट्रोजन 3s2 3p3 and 3p orbital that is a p orbital and having 1 1 1 एक इलेक्ट्रॉन है तो वो की है दैट इज़ ए हाफ फील्ड स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल दैन अनदर स्ट्रक्चर सो इस करके आ वाला की है सब तो स्टेबल है मॉलिक्यूल ठीक है एंड हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी है वैल्यू नेक्स्ट है इफ द साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज इन आयनेशन एंथैल्पी if the size of element increase its ionization energy as we know from left to right size देखते हैं साइज डिक्रीज होता जाता है तो जिन्ना साइज छोटा होएगा उन्नी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए बिकॉज इलैक्ट्रॉन आर मोस्ट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ठीक है जी तो ये की है जिन्ना साइज वड्डा है उन्ने की है वो टाइटली घट होंगे तो इस करके ईजली इलैक्ट्रॉन आउट हो जाएंगे तो सो ये आंसर होएगा इफ द साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज द आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेज ठीक है सेकेंड ऑप्शन on moving down the group the ionization energy would as we move down the group there is a increase in the number of shell as the number of shell increases the outermost electron so as down the group देखिए साइज इंक्रीज होंदा विद इंक्रीजिंग द ईच टाइम वन न्यू शैल ठीक है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ बाहर करना बिकम ईजी हो जाएगा क्योंकि इलैक्ट्रॉन की ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी ਉਹਦੀ बहुत ज़्यादा घट होएगी ठीक है इस करके साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप दैट इज आयनेशन एनर्जी वुड एंड डिक्रीजेज ठीक है
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग अलॉन्ग ए पीरियड आयनेशन एनर्जी वुड एज वी ऑलरेडी डिस्कस अगर अलॉन्ग द पीरियड जाने लैफ्ट टू राइट जाते हैं आप तो उन्ना साइज़ डिक्रीज़ हो रहा अगर साइज़ डिक्रीज़ हो रहा आयनेशन एनर्जी की हो जाएगी इनक्रीज़ हो जाएगी ठीक है। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ए मिनीमम बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड एंगल की गल करते हैं तो आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ अमोनिया, सेकेंड है CH4 दैट इज़ ए मीथेन, नेक्स्ट वाटर, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर देखते हैं अमोनिया हैविंग द पिरामिडल शेप ठीक है। अगर देखते हैं मीथेन दैट इज़ ए टेट्राहेड्रल ठीक है। अमोनिया दे विच 107.5 ठीक है। तो ये मीथेन दे विच दैट इज़ ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एंड 109.5 डिग्री ठीक है। अगर देखते हैं वाटर दे विच इन केस ऑफ वाटर दैट इज़ हैविंग 104.5 डिग्री ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ ए लीनियर दैट इज़ ए 180 डिग्री। सो मिनिमम बॉन्ड एंगल इन दैट इज़ ए वाटर मॉलिक्यूल दैट इज़ ए 104.5 डिग्री ठीक है जी। सो करेक्ट ऑप्शन वाटर होगी। नेक्स्ट द मॉलिक्यूल हैज़ ए लीनियर स्ट्रक्चर एज हुणे आपां ऑलरेडी डिस्कस किया गा। फर्स्ट है SO2 दैट इज़ ए वेंट शेप, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट NO2 एंड SiO2। अगर देखते हैं लीनियर विच हैज़ ए लीनियर स्ट्रक्चर दैट इज़ ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैव ए लीनियर स्ट्रक्चर ठीक है हैविंग बॉन्ड एंगल दैट इज़ ए 180 डिग्री ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ द पिरामिडल जोमेट्री इज़ एसोसीएटेड विद पिरामिडल जोमेट्री जी है वो कि एसोसीएट है। फर्स्ट दैट इज़ ए ऑलरेडी डिस्कस मीथेन है, सेकेंड है अमोनिया, थर्ड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ऑलरेडी ड्रा the all the structures methane had a tetrahedral, ammonia has a pyramidal shape ठीक है, water has bent and carbon dioxide have a linear shape. So correct option is B option. Next the total number of lone pair electron in I3 नेगेटिव आयन I3 नेगेटिव आयन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर देखते हैं ਆਪਾਂ तो I3 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 9 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो ये करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी साड़ी दैट इज़ ए 9 ऑप्शन ए। नैक्सट शेप ऑफ SO4 नेगेटिव दैट इज़ ए सल्फेट आयन है। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए स्केयर प्लेनर है, सेकेंड है टेट्राहेड्रल है, थर्ड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है एंड हेक्सागोनल है एंड करैक्ट ऑप्शन दैट इज़ ए टेट्राहेड्रल सल्फेट दी ठीक है जी ठीक है। ये वाली हो जाएगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट MCQ नेक्स्ट पेपर दे। फर्स्ट हैज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0101 दैट इज़ ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये आप लिखांगे। सो ये देखते हैं फर्स्ट जी 0 है दैट इज़ डजन काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड B 2, C 4 एंड D दैट इज़ ए 5 एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ 3 significant figures that is option A is correct answer ठीक है। now second question the empirical formula of sucrose C12 H22 O11 and first option that is a CH2, second CHO, third C12 H22 O11 and fourth option C water twice and the correct option is C option that is a empirical formula and molecular formula of glucose are similar ठीक है। next the molecular mass of glucose is glucose C6 H12 O6 है। सो ये देखते हैं 6 × 12 ठीक है एंड 12 × 1 दैट इज़ ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है 6 × 16 दैट विल गिव ऑल द सम अप दैट विल गिव सो ये 1272 12 × 12 तो 1696 टोटल आ जाएगा दैट इज़ ए 180 एंड करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ए B ऑप्शन दैट इज़ ए 180 AMU। नेक्स्ट दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स, 1 मोल रिप्रेजेंट द एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 6.022 10^10, सेकेंड ऑप्शन 6.022 मल्टीपल 10^6, थर्ड ऑप्शन 6.022 10^23। सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ए C ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकेंड है 5.56, थर्ड है 100 एंड फोर्थ है 55.5 एंड करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ए D ऑप्शन 55.5 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल इज़ बॉन्ड एंगल इज़ मैक्सिमम इन मैक्सिमम बॉन्ड एंगल के होएगा। आप ऑलरेडी हुण डिस्कस किया सीगा कि जो वाटर की गल करते हैं वाला कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ ए लीनियर है।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 180 ਬੌਂਡਿੰਗ 180 ਡਿਗਰੀ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। Next have which of the following hydrogen halide has the most polar bond? Polar bond they have the polarity arise due to the different charges on the two atoms, ठीक है। one is most electronegative element and one is most electropositive element. So let's see the option first, that is the H and F, and fluorine is most electronegative element and hydrogen is most electropositive element. Both are polar, and in case of electronegativity, fluorine atom is maximum electronegativity, then oxygen, then nitrogen. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਚ ਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ in so in which of the following the bond angle is maximum? Already discussed in carbon dioxide having the bond angle linear structure, and bond angle is 180 degree, which is largest, and hence correct option is C option, ठीक है। Next, which of the hydrogen halide has most polar? That is the HF. Fluorine is most electronegative element, hydrogen is most electropositive element, and fluorine is most electronegative element among the periodic table. So correct option, that is A option, is HF. Next question है साढ़े कोल, the element belong to group 15 and third period of periodic table, and electronic configuration would be in case of 15 group, the first option, that is a 1s2 2s2 2p6, that is a total 10 electron, and next 1s2 2s2 2p6 and 3s1 makes 11. Next C option, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3, and last option 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Correct option, that is a 1s2 2s2 2 6 and 3s2 3p3. Total 5 valence electron in 15 group, and the correct option is C option, ठीक है। Next, in which of the following has the maximum number of unpaired electron? Maximum number of unpaired electron in case of magnesium 2 positive ion, total 10 electron. In case of titanium 3 positive, and in case of magnesium 2 positive ion, total 10 electron, titanium 3 positive 19 electron, vanadium 3 positive, that is a 20, and iron 3 positive, that is a 23 electron. As we write in the electronic configuration, we can see that the iron 3 positive having a 23 and a d5 electronic configuration, that is become show that half filled and 5 unpaired electron and maximum number of unpaired electron, that is a correct option is D option, that is iron 3 positive. Next, identify the molecule which does not exist. And first option, that is a C2, second O2, third helium 2, next lithium 2, and the correct option, that is a C, that is a helium 2 does not exist. Next, and neutron are present in all the atoms except, neutrons are present in all the atoms except first option है helium, second carbon, third hydrogen है, and next that is a neon। तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1h1 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 0 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1 ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट मेक सेंस फर्स्ट ऑप्शन है 6s, सेकंड है 3p, नेक्स्ट है 2d, and next 4f orbital, and correct option, that is C option 2d orbital does not sense or does not exist, ठीक है जी। and next 4s orbital have magnetic quantum number values as 4s orbital, and that is a 4, that is principal quantum number, s show l is equal to 0 value, ठीक है जी। and first option is 2, second 4, third है -1 and fourth 0, so correct answer, that is a D option, that is a 0। next, which of the following is not possible? n equal to 3, l equal to 2, m equal to 0, next n equal to 1, l equal to 0, m equal to 0, next l equal to n equal to 3, l equal to 3, and next m equal to 2, next n equal to 4, l equal to 2, m equal to
So correct option is C option, that is not possible. 3f orbital. ठीक है. The two electron occupying the same orbital are distinguished by first, that is a spin quantum number, second azimuthal, third magnetic and principal quantum number, and the correct option, that is a spin. Two orbital है occupying the same orbital are distinguished by the spin quantum number that will upward and downward or clockwise or anti-clockwise spin. ठीक है. Next, in the correct ground state electronic configuration of 24, that is a chromium and copper, that will show exceptional configuration. In case of chromium, that is a 3d5 4s1. ठीक है. And similarly copper, that is a 3d10 4s1. ठीक है. These are the most important and expect electronic configuration which are half filled and fully filled stable. So option is first 3d5 4s1, second 3d4 4s2, next that is a 3d6 4s0, next 4s1 4p. So correct option is A option. ठीक है. Next isotope are the atom showing the same isotope. The isotope are the isotope having the element same atomic number but different the mass number. Same atomic number and different the mass number. ठीक है जी. Z वैल्यू डिफरेंट है और atomic number सेम है. ठीक है जी. So correct option, first option is mass number, second atomic mass, third number of neutron, next that is the atomic number, same atomic number. Correct option, that is a D option. ठीक है. Next is the designation of an orbital with n equal to 4, l equal to 3 is n equal to 3 4, l वैल्यू 3 आ रही है. l अगर 0 होएगी तो s ऑर्बिटल है, 1 है तो p है, 2 है तो d ऑर्बिटल है. ठीक है. 3 है तो f है. साढ़े को करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी 3 ਦੇ ਲਈ f एंड 4f ऑर्बिटल साढ़े को बन जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन है 4s, सेकंड है 4p, नेक्स्ट 4d एंड 4f, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए डी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. द आइसोटोप ऑफ द आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, एंड करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट द मास नंबर. सो दिस इज द wrong statement, that is a false. ठीक है. नेक्स्ट है कैथोड रेज डू नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. अगेन दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि ट्रैवल कर पाती है. नेक्स्ट सोडियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है जी. दोनों को 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. इन कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट एटम हैव रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, दैट इज द ट्रू. नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, दैट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन पैराग्राफ इस क्वेश्चन. In the modern periodic table, the elements are arranged in order of increasing atomic number. In related to electronic configuration, the elements in the periodic table are divided into 4 blocks S, P, D and F orbital. ठीक है. The modern periodic table consists of 7 period 18 group. In accordance with the above principle, the 7 period have 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 elements respectively. These are also called as magic number, and the F block elements are also called as a lengthened and extended series. Next, first question is how the elements are arranged in the modern periodic table. Modern periodic table, that is increase with the increasing atomic number value. ठीक है. Second question है what are the 4 block in the modern periodic table. Answer is that is S, P, D and F are the 4 block of modern periodic table. Next, how many groups and period are present in the modern periodic table. As we know, in the 7 period and 18 group are present in the modern periodic table. ठीक है. Next, that is how many elements are present in 7th period according to above principle. So 7th period of periodic table contain 32 elements. ठीक है. Next, how are the F block elements? What are the F block elements? F block elements are called because last electron enter into the F orbital. So due to that, these are called as a F block elements. ठीक है. Now next is next paper, the MCQ पर डिस्कस करते हैं. The number of significant figure in 0.0101, that is the first option 2, second option 3, third option 4, next option that is a 5, and the correct answer is decimal zeros before the decimal makes does not significant figures. So total significant figure in this molecule is, that is a 3 option B is correct option. ठीक है. The number of atom in 558.6 gram of iron, that is in case of atomic weight of iron, that is a 55.85, and given weight, that is a 558.5 gram. Number of moles, that is a given weight over atomic weight,
that will calculate, and it will give 10 mole. So 1 mole contain the Avogadro number of atoms, and 10 moles contain the 10 multiple कर देंगे, that will give the total number of atoms. ठीक है. Next given weight of carbon that is 60 है, and number of moles of carbon that will give 5. ठीक है. Given mass over molar mass or atomic mass, and the number of atom in 60 gram that is a 5 mole, that is a 5 multiple by Avogadro number. ठीक है. And number of atom in 8.5 gram of iron is twice the number of atom in 60 gram. So twice आ जाएगा ऑप्शन. So इस विच ऑप्शन देखते हैं आप. First option that is a twice, that in 60 gram carbon. Second half of the 8 gram of helium. Third that is a 6.023 10 to the power 22. And next 558.6 multiple 6.023 multiple 10 to the power 23, and the correct option is A option. Next, the formation of a CO and CO2 illustrate the law of, first law of conservation mass, second law of constant proportion, third law of reciprocal, and fourth law of multiple proportion, and the correct option that is a D option, law of multiple proportion. Next, which of the following pairs of the gases contain the same number of molecules? So correct option is A option, that is a 16 gram of oxygen and 14 gram of nitrogen. Is it detailed next discuss करेंगे numerically. Next, which of the following orbital does not make sense? That is first option 6s, second 3p, next 2d and 4f orbital. ठीक है. And correct option that is a 2d orbital does not make sense. ठीक है. For each value of L, the number of m values can be, first that is a 2l, second nl, third option 2l plus 1, next n minus l, and correct option that is a 2l plus 1 is the correct answer. ठीक है. How many spherical nodes are present in 4s orbital? 4s orbital है nodes that is a n minus 1 and a 4 minus 1 equal to 3. ठीक है. correct option 3 होनी चाहिए. First option that is a 0, second है B 2, third option that is a 3, and fourth option D is 4. So correct answer that is a C option 3. Next है which is the correct order of increasing energy of an listed orbital of atom in the titanium? First option है 3s, 3p, 3d and 4s orbital. Next 3s, 3p, 4s and 3d orbital. Next 3s, 4s, 3p and 3d orbital. Next 4s, 3s and 3p, 3d orbital. So correct option is B option, 3s, 3p, 4s and 3d orbital. Next, which of the following has maximum covalent character? As in case of covalent character, first option lithium iodide, lithium fluoride, lithium chloride and lithium bromide. As we know in the covalent character, the small, that is depend upon the three factor: smaller the size of cation, second larger the size of anion, third more will be covalent character or polarization. ठीक है. So इधर विच देखते हैं कि lithium the smaller size of cation सारे में present है, and larger the size of anion, that is the iodide having the large size. So correct option is A option. Next है hydrogen bond is the strongest in, hydrogen bond becomes strongest presence of hydrogen, and that will show hydrogen bonding with the most electronegative element. ठीक है. So correct option that is a first option, that is a SHO, second OHS, next FHF, next FHO. So correct option that is a C option, and that is a hydrogen bonding exists between hydrogen atom and most electronegative element, that is a fluorine. ठीक है. Next PCl5 molecule having the geometry, and in case of PCl5 molecule, that is the structure exists in P, that is exists in trigonal bipyramidal geometry. ठीक है. So correct option first option, that is a trigonal bipyramidal, second tetrahedral, third square planar, next planar triangular. So correct option is A option. ठीक है. triangular bipyramidal. Next which of the following is the largest in size and Cl negative ion, second S2 negative ion, next Na positive and F negative. As we know the statement, the size of an ion become larger than that of parent atom. ठीक है. And the size, more the size of an ion, more will be the size, and S2 negative has the largest in size. Next, which of the following is dependent upon temperature? As we know in the case of first option है molality, second है molarity, third mole fraction, and next weight percentage है. अगर molarity की गल करते हैं तो in case of molarity number of moles of solute divided by volume of solution, volume term present है which is a temperature dependent term है. ठीक है. इस करके molarity is the correct option. ठीक है. Next structure of IF7, that is a first square pyramid, next triangular bipyramidal, next octahedral and pentagonal bipyramid, and correct option that is a pentagonal bipyramidal is the IF7 structure. ठीक है जी.
Next comprehension based paragraph. In the modern periodic table, the elements are arranged in order of increasing atomic number, which is related to the electronic configuration, and depending upon the type of orbitals receiving the last electron, the elements in the periodic table have been divided into 4 blocks: S, P, D and F. The modern periodic table consists of 7 period 18 group, and each period belongs to the filling of a new energy shell in accordance with the above principle. The 7 period 1 to 7 having the 2, 8, 18, 18, 32, 32 elements respectively. The 7th period are still incomplete. To avoid the periodic table being too long, the two series of F block elements are called lengthened and actinide and are placed at the bottom of the main body of the periodic table. So let's start the first question. The elements with atomic number 57 that will belong to the S, P, D and F, that is a d block element because the last electron enter into the d orbital. Next, the last element of p block element and 6th period represented by the outermost electronic configuration. So first option 7s2 7p6, second 5f14 60 10 7s2 7p0, next is 4f14 5d10 6s2 6p2, next 4f14 5d10 6s2 6p4, and the correct option is that is a D option. Okay, next which of the following element whose atomic number are given below cannot be accommodated and present in the set of long form of periodic table, that is a 126. C option is correct answer. Okay. The electronic configuration of element just above the element with atomic number 43 in the same group, 43 18 group minus, that is a 25, and 25 atomic number, that is a manganese. In case of manganese, that is a 3d5 and 4s2. ठीक है, 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी. ठीक है. So next, that is a again first question, that is a how many significant figure in 0.0006, that is a first option 1, next is 2, 3 and 4. First option 1 is correct answer. Next, what are the number of atom in helium in 104 AMU is? So in case of helium, that is a 104 divided by 4 atomic mass, that will give 26. That is option C is correct answer. Next, what is the molarity of pure water? First option 1, second 18, third 55.5, and next none of these, and correct option that is a 55.5. Next, what is the empirical formula of sucrose? And sucrose, first option CH2, second CHO, third C12H22O11, and last option D C water twice, and the correct option that is a C option, sucrose, having the same molecular and empirical formula. Next, which of the following quantity are dependent upon the temperature? Again, this is the same question. First option, that is a molarity, is a temperature dependent term. First option A is correct. Next, mass of carbon in ethanol is first option 13, second 52, third 90 and 54, and correct option that is a B option 52. Which of the following is a mixture is homogeneous? That is the first option soil, second smoke, common salt, next air is the homogeneous mixture, and so on. Correct answer is that is a D option. Which of the following orbital does not make sense? That is a 6s, 3p, 2d and 4f orbital. Already discussed, 2d orbital has having the no sense. Okay. The number of radial nodes in 3s and 2p orbital are, and in case of radial n-1, and in case of 3s that is a 2 value, and in case of 2p that is a 1 value, and the correct option that is 2 and 1. So first option 2 0, second 0 2, third 1 2, and last option that is a D option 2 1 is correct answer. Next, neutron are present in all the atom except the, again similar question. First that is a helium, second carbon, third hydrogen, fourth neon, and correct option is a C option, that is a hydrogen. Next, what is the charge on cathode rays? That is a first positive, second negative, neutral, and none of these, and correct option is a B option. Okay. Next, that is a which metal foil used in the photochemical Rutherford scattering experiment. That is first option, that is a gold, second is silver, third lead, and all of above, and the first option that is a gold is correct answer. Gold foil is used in the Rutherford alpha ray scattering experiment. So next is paragraph based. The properties of the element such as atomic
or ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity are directly or indirectly to their electronic configuration and are called as periodic properties. A part of the periodic table is given below: carbon and nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, selenium, fullerene, chlorine, bromine, and iodine. And which of the following has the highest ionization enthalpy? And in case of fully filled or half filled electronic configuration having extra stability, and so first option nitrogen having the highest ionization enthalpy. Next, that is a so bromine belong to the first option and third, fourth, fifth and second. Correct option that is a B option, fourth period ਨੂੰ belong ਕਰੇਗੀ, ठीक है। next that is the highest negative electron gain enthalpy of first option of fullerene, and next nitrogen, and next sulfur or bromine. So second first option that is a F is correct answer. The highest ionization enthalpy of fullerene, oxygen, nitrogen, sulfur, that is a C option, nitrogen, half-filled electronic configuration. Next, which of the following has the largest size? Nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus. So correct option is that is D of the option, that is a phosphorus, ठीक है। सो ये ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਟੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Thank you, all the best.